Good morning, all of you. I hope audio and video both are working fine. So, a slight change in this schedule. This is only for today, okay? And from tomorrow onwards, we'll have the session at normal timing at 9 a.m. Sorry. So today is only for for 2 days. There is a change in time. So 8 a.m. Okay. कालिठू आमरा जेमती नॉर्मल 9 am रे क्लास हवा कथा सेमती ही हबो. Fine. I hope audio and video. Good morning, Sasmita. Please confirm whether everything is fine. Yes, Sasmita, please. So today is 7th August and we'll discuss national international news. Okay. So let's start. First, US tariff. We'll discuss US tariff. The second one is E20 fear and Uttarkashi, the disaster we have seen day before yesterday. Judicial overreach, gender disparity in the voter list, Das Lucky, Jai Jagannath. Biochar we'll discuss, and then right to recall, maritime law and monetary policy committee. Okay, so let's start. The first one is the US tariff. Trump raises US tariff on Indian imports to 50%. Okay, 50% पर्यंत tariff impose करायची. Let's see. US President Donald Trump imposes 50% tariff on Indian imports. On July 31st, it was 25% tariff was imposed on Indian imports. खास करके आपन देखिबे जो इंडिया रो जो प्रोडक्ट्स गुड एक्सपोर्ट होची यूएस इंपोर्ट करूची फ्रॉम इंडिया, on that 25% was imposed and additional 25% was imposed on the 6th August. Okay, so total tariff is 50%. The justification कौन दूची is US. Why US is imposing so much of tariff? US saying that India is continuing import from Russian oil. Okay, India is continuing import from Russian oil, which is the US claiming undermines sanction imposed due to the Ukraine war. The US कहबा कथा होची जो यूक्रेन रशिया वॉर को नहीं कि हमें सैंक्शन इम्पोज करथिलु. सैंक्शन माने होची सपोज US इम्पोज सैंक्शन इन द रशिया, दैट मीन्स US रा जते फ्रेंड्स अछंदी, US रा जते अलाय अछंदी, US रा जते लाइकली माइंडेड कंट्रीज अछंदी, they will not have any kind of trade with the Russia. Okay, or they cannot use the US currency और जहाँ का मैं डॉलर बोले कोचे, right? But India is consistently importing. So the new 25% hike will come into effect in 21 days from the date of the executive order. Okay, so जो new 25% hike होची that will come into effect 21 days from the date of the executive order. जेबे भी order से बाहर करिवे तार 21 days पर सेटा लागू ही जो. Okay, cites national emergency due to Russia's sanction या Russia's action in Ukraine. खास करके consistently US is saying कारण इंडिया रशिया रो रिलेशनशिप इज काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, तो से US स्टैंड नौची. Claims India is directly indirectly importing Russian oil. The US had previously warned India of penalties for continued Russian oil trade. So this is something very hypocritical in nature. If you see the European Union is also importing. हमें काली भी डिस्कस करूले यूरोपियन यूनियन भी कौन करुची इंपोर्ट करुची रशियन ऑयल. ओके, सो इंडिया इज डूइंग द सेम थिंग. इन फैक्ट यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट इज हायर दैन द इंडिया, but Trump is doing nothing for the European Union but imposing 50% tariff on India. This is what we call the double standard. The main reason होची आपनकर जो ट्रेड नेगोशिएशन थिला बिटवीन द इंडिया यूरोपियन
सॉरी इंडिया यूके सेटा सक्सेसफुल होइछि बट इंडिया यूएस को नहीं जो ट्रेड नेगोशिएशन थिला दैट इज ऑन द मिड ऑफ द नेगोशिएशन फाइनलाइज ही परनी एंड इट्स टेकिंग टाइम सो दिस इज वन फैक्टर जो कि यूएस bit of assertive with respect to India and US रो जो conditions गुड़िक अच्छी what are those conditions for example आमे discuss करते ले dairy sector को access करिबा okay automobile sector को access करिबा liquor industry को access करिबा जोटा कि India is quite apprehensive कि ये sector रे आमे complete full access दे परिबो नहीं because our livelihood will be in stake जदि आपण dairy sector को देखिबे women are one of the बिगेस्ट एम्प्लॉइज इन द डेयरी सेक्टर खास करके जो आनंद डेयरी ये सब अच्छी तो से यूएस को एक्सेस इंडिया दौनी है सो यूएस इज रिटालिएटिंग इन दैट मैनर सो व्हाट आर द इम्प्लिकेशंस फॉर इंडिया एक तो बायलैटरल ट्रेड इंपैक्ट रहिबो कारण इंडो यूएस भितर जति ट्रेड थिला डेफिनेटली दैट विल कम डाउन सो इन व्हाट इंडस्ट्रीज जेमती फार्मास्यूटिकल गोटे इंडस्ट्री अच्छी मेडिसिन्स टेक्सटाइल अच्छी टेक्सटाइल आम चाहूँ यूएस रो मार्केट एक्सेस बिकॉज टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्रीज आर द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड थ्रू दैट इंडस्ट्रीज वी कैन जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट opportunities as well, right? Gems and jewelry is another factor. IT hardware and automotive components are another factor. These are the few areas where India is having a good trade and good volume of trade with respect to US and जोटा कि हम पर आपणकर हबो. If you see the strategic strain could strain Indo-US relation कारण इंडिया यूएस रो जो पार्टनरशिप अच्छी जदि आप देखिए खास करके पोस्ट 1990 रे यानी कि आफ्टर द लिबरलाइजेशन एरा इंडिया यूएस रिलेशनशिप काफ़ी इनक्रीज होइछि इंटेंस होइछि जदि आप देखिए इंडिया रो इंटरेस्ट कौन थिला टू काउंटर द चाइना कारण रशिया वाज क्वाइट वीक Russia was quite weak after the 1991 कारण dissolve of the disintegration of the USSR ହେଇଛି so Russia सेते powerful नथिला but to counter the Chinese hegemony in the Asia और खास करके गोटे enemy state को counter करिवा पई इंडिया रो दरकार थिला कि US and US was the only superpower in 1990s तबे यूएस रे कोन दरकार थिला व्हाई यूएस वाज क्वाइट इंटरेस्टेड विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया द फर्स्ट रीजन वाज द मार्केट बिकॉज इंडिया इज हैविंग द लार्ज market with of 100 crores above the 100 crores of population now it's around 145 plus second hoji obviously again the same thing ki India is the only country who can counter the Chinese hegemony in the Asian region खास करके कारण US perceive करूची China is the next threat कारण US is not considering Russia as a threat US is considering China as the threat so China को counter गोटिए country करि परिबो that is India so this was the foundation of the relationship between these two countries and both the countries adopted this कारण US already capitalist country thila and India also adopted the same policy so they have a good ties after 1990s but due to this tariff and uncertainty just after coming to power of Trump ये relationship definitely strain हबो so को जगह हबो देखो इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन जोटा कि हमें क्वाड अलायंस कहूचे क्वाड अलायंस देयर आर 4 कंट्रीज आई थिंक यू नो गोटे हूँ जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड यूएस तेणु दुईटी पार्टनर जदि तांका भितर माने प्रॉब्लम रहिबो डेफिनेटली क्वाड ग्रो करि परिबो नाही then the defense agreement India is considered as one of the biggest defense partner in terms of US and India is importing defense equipments from the US okay गोटे टाइम रे रशिया रो करूतला आज भी करूची बट यूएस सहित भी करूछ दिस इज अनदर डायमेंशन जोटा कि हम पर हेई पारे ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर अंडरमाइंड ऑब्वियसली WTO लेड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम या WTO रो मेन जो पर्पस कोन थिला कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करिबा फ्री एंड फेयर ट्रेड बट ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्शंस ऑन टैरिफ देयर विल बी जो आपण कोइ परिबा ना कि एंटी फ्री ट्रेड या रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड डेफिनेटली हबो ओके तो दिस इज वायोलेटिंग द WTO norms as well energy diplomacy if you see India has maintained its strategic oil ties with Russia due to affordability and supply stability affordability हमें Russia to जति कि किणुचे that is we can afford that plus we have Russia is the all weather friend बोली हमें कहूचे तेणु रशिया सहित आम टाइज को केबे ब्रेक करि परिबा नाही बट वी हैव टू बी वेरी बैलेंस विथ रेस्पेक्ट टू
रशिया विजाविज यूएस और यूएस विजाविज रशिया ये हूँ जिनस ओके नेक्स्ट टॉपिक को जीवा E20 fear petrol lobbies behind E20 fuel fear campaign Gadkari Union Road Transport Minister Nitin Gadkari stated that a misinformation campaign against the E20 means ethanol जो 20% ब्लेंडिंग हो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आसाला आपण मैंने देखिथे जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो सेटा गोटे मिसकनसेप्शन स्प्रेड करा जोटा कि गडकरी कहते कि जो आपंकर फ्यूल एफिशिएंसी को कम करुच्ची एंड इंजिन को डैमेज करुच्ची दिस इज वन समथिंग गडकरी ताको कंसर्न रेज करिसेंती गडकरी एम्फासाइज दैट ऑटोमोबाइल कंपनीज इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन डायरेक्टेड टू मैन्युफैक्चर E20 कंपैटिबल इंजिन्स तो ये जो स्प्रेड करा जाउची र्यूमर दिस इज नॉट एट ऑल द फैक्ट इट्स सिंपली ए र्यूमर तो ही अक्यूज दिस वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ स्प्रेडिंग फियर दैट E20 डैमेजेस इंजिन एंड रिड्यूसेस फ्यूल एफिशिएंसी तो जो मैंने पेट्रोल लॉबी वाला अच्छा ना से मैंने ही मिस इनफॉरमेशन को स्प्रेड करूँ आम देखा E20 कौन आमर E20 इज कंसिडर्ड एज द 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल जो स्टार्ट करागला इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी कि इथेनॉल मिक्सिंग विद द पेट्रोल इट वाज स्टार्टेड विद ओनली द 5% ग्रेजुअली इट इंक्रीज टू द 20% पार्ट ऑफ द India's plan to reduce dependency in the fossil fuel and cut carbon emission. This is one aspect. E20 rollout began in February 2023 and is expected to be pan-India by 25-26. So it has start के करा February 2023 रे and it will cover the whole India by 25-26 सुधा हमें देखी परिवा. Okay. Government stand जते देखिए E20 safe tested for the use in the new generation vehicles. It will help into with respect to reduce the import of the oil in fact. Okay. तो जेहेतु इथेनॉल आमर ऑलरेडी प्रोड्यूस होची आम कंट्री तो पेट्रोल ऊपर डिपेंडेंसी कम रहिबो. इट विल सपोर्ट द सुगर केन एंड ग्रेन फार्मर्स जो इथेनॉल रो मेन रॉ मटेरियल टा कोन अछि सुगर एंड ग्रेन राइट. सो फार्मर विल गेट अ बेटर इनकम. It will reduce the greenhouse gases emission by 35% compared to the pure petrol. Okay. So what is ethanol? Ethanol is a renewable biofuel made primarily from plants like sugarcane, maize, जोटा के मक्का बोली कहूँ and other biomass. As a fuel, ethanol is widely used as a biofuel to blend with the petrol. In India, petrol is blended with ethanol in ratios like 10, 10% and E20. Now the standard is E20. Initially 5 thala and then gradually increased. It burns cleaner than petrol, emitting less carbon monoxide and hydrocarbons. So this will reduce the pollution as well, air pollution as well due to this vehicle. How is ethanol produced? देखिए fermentation of the sugars from sugarcane, molasses होची जोटा waste material of the sugarcane after extracting the juice. Okay. Or corn are fermented by yeast to produce ethanol. If you see the distillation, ethanol is then purified through distillation. तो distillation जरिए तको purify भी करा जाए. If you see the dehydration removes water to make it fuel grade ethanol. Okay, so these are the process: first fermentation, the distillation, and then the dehydration. Moving to the next, Uttarkashi slipping disaster. Government must monitor silt accumulation at vulnerable points. So, I mean, it's not very sure for what purpose this Uttarkashi flood or flash flood we have seen, but there are possibilities. जिमती कहा जाउची cloud burst is one factor. Second factor is let's say जो normal flow था river या water bodies रो सिटी जेहेतु siltation होची that change the course जोति पाएंगी जो एरिया रे पानी जीवा कथा नथिला से एरिया को फ्लड कर दिया जाइतिला यानी कि लैंडस्लाइड टाइप रो कंडीशन हला. इनफैक्ट क्लाउड बर्स्ट भी हमें कहूचे जोटा. तो देयर आर मल्टीपल सच फैक्टर्स जोटा कि डिस्कस करा जाउची. बट लेट्स सी उत्तरकाशी केस रे 5th August 2025 a flash flood in Dharali town that is Uttarkashi caused by the heavy rainfall. कौन cause थिला देखंदो torrential rainfall causes nearly 30 centimeter rainfall in a single day 3 to 5th August with due to monsoon peak.
तो कहुच्छे जो 2 दिन भितर 30 आई थिंक यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड द लास्ट ईयर ऑल्सो केरला वॉज विक्टिम ऑफ सच काइंड ऑफ इंस्टेंसेस केरला डिजास्टर. So 30 centimeter rainfall we have seen within the 2 days, and cloudburst claim authorities labeled it as cloudburst but lacked IMD radar verification. तो cloudburst भी कहा जाउची and sudden rainfall जोटा हमें देखिବାକୁ मिलुची. IMD defines cloudburst as more than 10 centimeter in an hour. Okay, rain over 10 square kilometer area. जदि 10 square kilometer area भितरे 10 सेंटीमीटर अधिका विदिन 1 आवर भितर होची ताको आमे क्लाउड बर्स्ट बोली कंसिडर करूचे. नो लोकल राडार मीन्स साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इज स्पेकुलेटिव. तो जेहेतु लोकल राडार नहीं तो वी आर जस्ट सिंपली स्पेकुलेटिंग दिस कुड बी द रीजन. इफ यू सी द एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी, हिमालय फ्रैजिलिटी, जियोलॉजिकली अनस्टेबल एंड प्रोन टू लैंडस्लाइड, इरोजन एंड फ्लड्स. कारण यदि जियोलॉजिकली आपण देखिबे the Himalayan region is very much fragile in these days due to the increased economic activities, the anthropogenic intervention, the tourism, promotion of tourism, and real estate, the buildings, and जो जहाँ भी कंस्ट्रक्शन बर्तमान चली हाईवे जो अपन टनल्स रोडवेज ये जो जिनसे कंस्ट्रक्शन चली इट हैज़ मेड द जोन मोर फ्राजाइल. सॉइल सैचुरेशन एंड डेब्रिस फ्लो जब देखिए कंटिन्यूस रेन में have loosened soil creating a mass movement of the water, debris and silt. तेणु कंटिन्यूस वर्षा पाई जदि आपण देखिबे जो सॉइल अच्छे ना सॉइल कभी लूज भी हो जाई पारे जहाँ फल आपणकर मास मूवमेंट वाटर डेब्रिस एंड सिल्ट ये भी देखा जाई पारे. Anthropogenic factors, if you see, unregulated infrastructure projects, just I mentioned कि road, tunnels, dam, buildings, etc. ये ताको fragile करूची. And accumulated debris acts as latent explosive. कारण debris से थोड़ा धीरे धीरे accumulate हो जाना. So sudden rainfall या intense rainfall फल से debris कौन करूची flow करूची. Exactly we have seen the video which has been released or which has been there in the social media in case of the Uttarkashi. So climate change is one such factor due to the increase in the average temperature. आम देखुचे जो आइस कैप अच्छी ग्लेशियर गुड़िक अच्छी से गुड़िक मेल्ट होची and that is again water फ्लो आपणकर बढ़ुची. दिस इज वन सच फैक्टर. वे फॉरवर्ड कौन हो पारे. द फर्स्ट वन इज द रियल टाइम मॉनिटरिंग, इंस्टॉल वेदर रैडर एंड ऑटोमेटेड रेन गेज इन हाई रिस्क जोन और जो वल्नरेबल फ्राजाइल जोन अच्छी वी हैव टू इंस्टॉल देयर रैडर एंड ऑटोमेटेड रेन गेज सो दैट वी कैन रिकॉर्ड द रेन. Silt and debris mapping, identify those vulnerable areas where there is more such debris or accumulated silt so that we can clear it before such instance or before such disaster. Land use planning, restrict construction in ecologically sensitive zone. Disaster preparedness, early warning system, mock drills and local training. I think you must have aware about the ecologically sensitive zone. What is this ecological sensitive zone? जोटी की खास करके जो वाइल्ड लाइफ डिविजन्स अच्छी फॉरेस्ट गुड़िक अच्छी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन इज कंसिडर्ड एज द बफर टू दोज रिजर्व फॉरेस्ट हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया जो गुड़िक अच्छी कारण सम पार्ट ऑफ दैट एरिया और आउटर line of that protected area would be considered as the ecological sensitive zone which is considered as the buffer और जोटा का में shock absorber भी कहू. direct impact हबो नहीं का ऊपर protected areas a reserve forest ऊपर it will absorb those shocks. Disaster preparedness is something very crucial. Early warning system, mock drills and local training and community participation. In fact, the local people must be involved and they must involve in the creation of awareness and those things. Climate resilient infrastructure, prioritize green infrastructure over the concrete heavy projects, and we must focus on the small infrastructural projects rather than the large construction and all. The next topic is the judicial overreach. Judicial overreach the Supreme Court, while hearing a defamation case against Rahul Gandhi related to his 2020 Galwan remarks, made oral observations questioning his patriotism. Justice Dipankar Datta reportedly said Mr. Gandhi would not have made such remarks had he been true Indian. Okay, तो केस जो आपंकर थिला से गलवन वाली जो इंसिडेंट होता स्टैंड अप बिटवीन द इंडिया एंड चाइना एट द गलवन प्लेस राहुल गांधी तापर किसी कमेंट करते से कमेंट को लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज कर. इनफैक्ट डिफेमेशन केस तो होता कि हाउ कैन राहुल गांधी क्रिटिसाइज आर्मी और द गवर्नमेंट तो ता ऊपर किसी दिस इज कंसर्न अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी. तो सुप्रीम कोर्ट भी सेम लाइन ऑफ क्वेश्चन कर. ओके,
ତେବେ କନସର୍ନ କ'ଣ ଅଛି, କୋର୍ କନସର୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଓଭରରିଚ୍. ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ରୋଲ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ ଦ ଲ. ଓକେ, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀର ରୋଲ୍ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ ଦ ଲ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, not pass any subjective judgments on patriotism or political loyalty. And ये जो जिनसटा कुआगला that simply shows the patriotism ऊपर क्वेश्चन रेज करागला राहुल गांधी कि जदि पैट्रियट ही थांते देशभक्त ही थांते तबे ये भली स्टेटमेंट दे न थांते. दिस इज समथिंग व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेइंग और द जस्टिस इज सेइंग. सो सेति ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି कि जुडिशियरीर रोल होची लॉ को इंटरप्रेट करवा, not pass the subjective judgment on patriotism or political loyalty. The court remarks stray into realm of executive or moral commentary. Okay, so realm of executive or moral commentary in the sense कि Supreme Court is moving into the direction of the executive, कारण executive या legislature किसी decision नहीं पारे ये टाइप रो offensive speech हो क्या hate speech हो करे तापरे सेटा को चैलेंज करा जाए पर सुप्रीम कोर्ट इफ इट वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट देन इट विल बी स्ट्रक डाउन. बट सुप्रीम कोर्ट रो एभली स्टेटमेंट दैट शोज जुडिशियरी इज एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर प्रोवाइडेड वी हैव फ्री स्पीच एंड पॉलिटिकल डिसेंट एज वेल. Criticism of government policies, especially by the opposition, is protected under Article 19 Clause 1 Subclause A, right to speech, जोटा हमारा अच्छे freedom of speech and expression, and plus Gandhi's statement fall within the domain of legitimate political discourse. Precedent and democratic norms, such remarks by the court may chill political criticism, embolden criminalization of dissent and undermine opposition accountability. That means एक तो political criticism को आहुरी मैंने बढ़ावा देवे, यानी कि simply जितने आमे गोटे ट्रेंड एबे देखिजे, if you criticize the government, if you criticize the government policies, it is considered as though criticizing the country. You are questioning on the country. That means you are raising question on the or आपनकर patriotism is in stake. Exactly ब्रिटिश टाइम रे भी से जिनस चली थिला. ओके, ब्रिटिश टाइम रे आपण देखिबे ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट यदि आपण क्वेश्चन रेज कले, यदि ब्रिटिश पॉलिसी को क्रिटिसाइज कले, दैट इज कंसिडर्ड एज द यू आर क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी, द क्राउन. दैट मीन्स यू आर द जो कहते नहीं कि यू आर द ट्रेटर. Okay, you will be considered as a traitor. The similar kind of situation is there in our current political system. So criminalization of dissent is another factor. कि dissent यदि आपण oppose करूचन ताकू criminalization कर दिया जिवो, यानी कि that is a criminal activity and undermine the opposition's accountability. तो जो सरकार opposition प्रति जो accountability रहिबा कथा, okay, responsibility रहिबा कथा, obviously they won't. Judicial overreach टिके डिटेल रे देखिबा. Judicial overreach occurs when judiciary oversteps its constitutional mandate and interference in the domain of the legislature or the executive. Legislature और executive domain रे जतबेले एंटर करूची सेति पई ताकू हमें कहूचे judicial overreach, thereby disturbing the separation of power. Separation of power concept की देइथिला जदि कि आंसर करि परिबे. Separation power जदि आपण यूएस रे देखिए ना, यूएस रे देर हैव बीन ए वाटर टाइट कंपार्टमेंट, यानी कि काफ़ी डिमार्केट करा जाइए सेपरेशन ऑफ पावर को. बट यू ओन फाइंड सच वाटर टाइट कंपार्टमेंट इन केस ऑफ इंडिया. इंडिया रे अपन को ओवरलैपिंग पावर देखा मिले. तो सबुठू बड़ एग्जांपल होची इफ यू सी द मिनिस्ट्रीज या मिनिस्टर माने जो मैंने अच्छे दे आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड दे आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एज वेल. सो ओवरलैपिंग इज देयर. सो आम ताको बहुत ही वाटर टाइट कंपार्टमेंट या डिमार्केशन आम कहीपर ना, बट स्टिल सेपरेशन ऑफ पावर इज देयर. कारण एज पर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द 7th शेड्यूल आप देखिए जो सब्जेक्ट गुड़िक अच्छी कनकरेंट लिस्ट ये अच्छी से आमर एक तो स्टेट और सेंटर रोल को डिफाइन करा जाइए. सिमिलरली एग्जीक्यूटिव रोल को डिफाइन करा जाइए, लेजिस्लेचर रोल को डिफाइन करा जाइए एंड जुडिशियल भी रोल को डिफाइन करा जाइए. गोटे सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट अच्छी जुडिशियल एक्टिविज्म. आप देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म कौन, इट बिकम्स ओवररीच व्हेन द जुडिशियरी स्टार्ट्स लेजिस्लेटिंग और एग्जीक्यूटिंग रादर देन इंटरप्रिटिंग द लॉ. सो दिस इज द डेफिनेशन. ये जिनस को जदि क्वेश्चन आसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, देन यू कैन हाईलाइट दिस डिफरेंस.
So you can see the difference within constitutional limit, judicial activism, and within constitutional limits, mandating police reform via Supreme Court directives. यानी कि एग्जाम्पल अपन नहीं पारे कि सुप्रीम कोर्ट कही पारे एग्जीक्यूटिव कि भाई पुलिस रिफॉर्म करो, दैट्स इट. बट पुलिस रिफॉर्म केमिति हम लॉ को टाइप पास करा से जिनस आपंकर जुडिशियल ओवर रिच हो जदि ता ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देदेला कि ए टाइप हो. जमती गवर्नर केस आम देखिले तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड गवर्नर के भितर जो केस टी चलता एंड इट वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. वी हैव सीन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स what would be the time frame or what would be the duration within which president and governor will give approval to a particular bill. That is considered as the judicial overreach because that duration or the timeline must be decided by the parliament. यदि अपन constituent assembly को देखिए, that power has been given to the parliament, not to the supreme court. So that is known as the judicial overreach as well. Legitimacy देखिए democratic check यानी कि democracy रे judiciary को balance करा जाई पारिबो. Okay. Coming to the judicial overreach, exceeds constitutional boundaries. यदि constitutional boundaries को से exceed करूची, cancelling laws without valid constitutional basis, and undemocratic interference. So these three are considered as the judicial overreach. Okay. Judicial overreach यदि देखिए example, Supreme Court oral remarks on the Rahul Gandhi's patriotism. Just हमें केस को डिस्कस भी कले. सेमती 16 रे 2016 रे कहा जाइतला national anthem order. The Supreme Court mandated anthem playing in cinema halls, later diluted, seen as the moralistic overreach. तो Supreme Court order कहला कि नहीं सिनेमा हॉल रे आपनकर national anthem बाजिबो. Supreme Court banning firecrackers during Diwali 17 to 21, citing the pollution, but this order must be given by the executive, not by the judiciary. Causes कहीं judicial overreach among executive and legislature, they are failed to do something. They are in passive mode. They are not in active or action mode. This is one part. Second part, legislature रो भी कोनोसी clarity न था and there is a delay. Third, rise of public interest litigation. Public interest litigation अपने जानी थी simply जो different issues को नहीं कि let's say tribal interest, let's say women interest, ये सब को नहीं कि PIL जो फाइल करा जाउची सो सुप्रीम कोर्ट ताको भी मध्य एंटरटेन करूची, कंसिडर करूची. मीडिया एंड पब्लिक प्रेशर इज वन सच फैक्टर जो कि जुडिशियरी इज गोइंग बियॉन्ड इट्स डोमेन किसी जजमेंट से दूची. जुडिशियरी इज असर्टिंग इटसेल्फ इज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नेक्स्ट इज judicial overreach रो for and against किसी देखिए arguments in favor of the judicial overreach. Checks executive legislative arbitrariness in the sense that the executive and legislative ठीक से काम करो नहीं, definitely judiciary will be there to correct it, manage it. Accountability and transparency को increase करेगा of whom, again the same executive and legislative. Empowering the voiceless citizen यानी कि PIL थ्रू रे यार सबुठु बड़ा उदाहरण होची मिड डे मिल जदि जुडिशियल एक्टिविज्म न था बहुत मिड डे मिल भी आज न था जोटा को आम पर राइट टू फूड हिसाब से देखी मिड डे मिल दि जाऊँगी. वॉइसलेस सिटीजन को वॉइस दूची PIL माध्यम फिल्स लेजिस्लेटिव वैक्यूम और जो जगह लेजिस्लेचर काम करूना इन कैपेसिटी से जगह जुडिशियरी निजर पावर को एक्सरसाइज करूची. ओके फाइन. नेक्स्ट देखिए जेंडर डिस्पैरिटी इन द वोटर लिस्ट. ये वोटर लिस्ट होची आपनकर बिहार रे जो रिसेंटली स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हेतला तो बर्तमान देखा मिलूँ वुमेन वोटर्स मानकर ना को डिलीट कर दिया जाइए. सो देयर आर मोर वुमेन वोटर्स whose name were deleted from the list than the male counterpart, or despite higher male out migration अधिका थाई कि भी वुमेन मानकर ना कटा जाइए वोटिंग लिस्ट रू. जदि किसी फैक्ट्स आपन देखिए मेल इलेक्टर माने थिले केते देखंतु जनवरी रो अगस्त 2025 डिक्रीज बाय 25 लाख. फीमेल सेम देखिए डिक्रीज बाय 31 लाख. ओके तो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट देखिए गोपालगंज वुमेन ड्रॉप हो 17.8%, मेन हो 11%. ओके एटी जो फीमेल देखो डिक्रीज बाय 31 लाख, ये हूँ 25 लाख, यानी 6 लाख आपंकर वुमेन मानकर
voting list ना हटई दि जाइए. What is concerning ना बिहार जदि आप देखिए 12 crores population 10 to 12 crores population सेठी almost 4 crores लोग migrated माने out migration या different cities या places they are staying, but still out migration अधिका हैला पर भी if you see women माने कौन कंटिन्यूसली सीटी का रेसिडेंट बट स्टिल वुमेन मानकर भोट को काटी दिया जाइए. आउट माइग्रेशन इज मोस्टली मेल डोमिनेटेड. NSSO data shows among migrants from other states 31% were men, only 7% women. Death rates between men and women are nearly equal. Duplicate entries or untraceable voters account for relatively few deletion. This means more female deletions are not logically explainable by the migration and the mortality. तेणु कौन पाई डिलीट करागला किसी कॉज ही नहीं, तेणु से सेठी का रेसिडेंट माइग्रेट तो करी ना कंटिन्यूसली स्टेइंग इन दैट प्लेस. सेकेंड आस्पेक्ट इज मोर्टालिटी भी अधिका नहीं. ओके, तेणु व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, कहीं आम डिलीट कर. पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कौन हो पारे. वन इज द जेंडर गैप इन सेल्फ एनुमरेशन ड्यूरिंग SIR. सेल्फ एनुमरेशन होता ही पारे कि फीमेल माने सेमानंकर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट गुड़िक सबमिट कर न करिथिबे या जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फीमेल को पाखे नथिबो. आइडियली सेटा हुए फीमेल मेल मानंकर इमिडिएटली गोटे नुआ डॉक्यूमेंट तैयारी हो जाए, राइट. दे देमसेल्फ रजिस्टर विद द गवर्नमेंट टू गेट द बेनिफिट्स, बट फीमेल मानंकर डिले ही चले जोटा कि आम कहीपर इंटेंशनली दैट इज बीइंग डिलेड. सो जेंडर गैप इज वन सच फैक्टर. वुमेन मे हैव बीन अनेबल टू सबमिट फॉर्म्स. ओके, female literacy in Bihar is just 55% versus 76% for males. So social barrier another factor होता ही पारे कि जेहेतु मेल मेंबर घरे नहांती तो फॉर्म को फिल करवा डॉक्यूमेंट को रेडी करके सबमिट करवा दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल. ओके, तेणु से ये भी गोटे फैक्टर होता ही पारे. नेक्स्ट देखो टेक एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर. वुमेन माइट लैक डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल एक्सेस, अवेयरनेस जड़ा ही नथिबो कौन चली टेक्नोलोजी को एक्सेस करि पारु नथिबे, डॉक्यूमेंटेशन तांका पाखरे नथिबो टाइमली. ओके, पैट्रियार्कल हाउसहोल्ड स्ट्रक्चर मध्य कुड मीन मेल हेड्स डोमिनेट फॉर्म फाइलिंग. ओके, तेणु पैट्रियार्कल हाउसहोल्ड स्ट्रक्चर कौन ना कुड मीन मेल हेड्स डोमिनेट द फॉर्म फिलिंग्स. मेल माने ही फॉर्म फिल करुथबे, तेणु जदि मेल नहांती तो ओबियसली फॉर्म फिल करा जाई ही पारि नथिबो. Invisibility in the public record, gendered pattern in mobility, identity documentation and residency proof, it is not in the public record. ये भी गोटे फैक्टर है ही पारे. यानी कि मिसिंग वुमेन आपण जो लापता लेडीज टाइप रो मिसिंग वुमेन फ्रॉम द ऑल दोज डॉक्यूमेंटेशन विद द गवर्नमेंट. इम्प्लिकेशन देखिबा डेमोक्रेटिक एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन, disenfranchisement in a state with already low female participation in the political power. Voting list nahi mane they cannot vote. That means we are depriving them from the voting. Undermines women's political agency, especially concerning in a state where women voters have often been more proactive. तेणु political participation भी सेमानकर ही परला नहीं, empowerment ही परला नहीं, and electoral integrity. Biased deletion create distorted voter rolls affecting free and fair election. केवल मेल मान ही दे परिवे and female मानकर कोनोसी चॉइस या सेमानकर विल को आम एक्सरसाइज करि पारुना हो. नेक्स्ट होची बायोचार देखिबा. A carbon rich byproduct produced from the agricultural residue or organic municipal solid waste through pyrolysis, thermal decomposition without oxygen. Pyrolysis एटा को मन रखते हुए pyrolysis is known as the managing the waste. This is one such technique, managing the waste और खास करके solid waste कोई परिवे. Function as a carbon sink, can store carbon in soil for 100 to 1000 years. Carbon sink हिसाब से भी यूज करा जाए. If you see the Indian potential, India generates 600 million tons of agriculture residue annually. Residue in the sense कि जदि आपण देखिबे जो stubble burning हमें करा जाउछ, this is one type of waste as well. जो पराली या stubble burning को आ जाउछ जहाँ पे पूरा नॉर्थ इंडिया पोल्यूट होउछ ड्यूरिंग द विंटर.
60% million tons municipal solid waste जो household industries commercial places रू collect करा जाउची using 30 to 50% of this 15 to 26 million tons of biochar can be produced annually. यदि 30 ରୁ 50% ही आम यूज करवा तेज वी विल हैव ए डिसेंट अमाउंट ऑफ बायोचार प्रोडक्शन. सो CO2 रिमूवल करा जाई परिबो 0.1 gigatons per year. ओके, बाय प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी पोटेंशियल सिन गैस देखिए आम गैस को प्रोड्यूस कर सिन गैस जोटा कि आम एनर्जी यूज कर सेमती बायो ऑयल को आम प्रोड्यूस कर. ओके, and that will reduce the oil dependency on other countries and we can use them for the fuel purposes रे भी यूज करि परिबा to ensure the energy security. Sector wise application देखिबे एग्रीकल्चर ही परिबो, improves water retention in dry soil, cuts N2O emission जोटा नाइट्रोजन ऑक्साइड अपन अछि ता भी कमी जिवो, soil fertility अपन एनहांस हो, fertilizer requirement भी अपन कमिवो. If you see the construction, additive to concrete boost mechanical strength, increases heat resistance by 20%, captures 150 kg of CO2. ये भी आपनकर कार्बन को अब्जॉर्व करके रखी परिबो. ओके, इंडस्ट्रीज हम देखो मोडिफाइड बायोचार कैन अब्जॉर्व CO2 को अब्जॉर्व करा जाई परिबो from the air atmosphere, still less efficient than conventional CCS method. वाटर ट्रीटमेंट रे भी यूज करा जाई परिबो. 1 kg बायोचार कैन ट्रीट 200 to 500 liters and potential to treat India's untreated 72% of daily waste water. जो वेस्ट वाटर को रिसाइकिल भी करा जाई परिबो and demand is 2.5 to 6.3 million tons per year. Right to recall देखिबो, what is the status of the recall vote in Taiwan रे recall vote या right to recall को रखा जाई छी. राइट टू रिकॉल इज पार्ट ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी. कारण जदि हम इंडिया देखिए, इंडिया हूँ प्रैक्टिसिंग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बिकॉज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन द सेंस आप एक तो आम डायरेक्ट वोट तो दौचे एवं देर आर मेनी सच इंस्टांसेस आम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी प्रैक्टिस कर. जमी राज्यसभार मेंबर्स देखिए, लेट्स से प्रेसिडेंट को आप देखिए आम डायरेक्टली तो इलेक्ट करूने. सो राइट टू रिकॉल हूँ जोटा कि आम कहीपर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द आप कहीपर इन द कौन अकाउंटेबिलिटी केस रे. राइट टू रिकॉल हूँ इफ ए पर्टिकुलर member of parliament, let's say, or a person is not performing, then you can simply recall that person. आमे vote देगी select करूँ, that's it, but आमे recall करी पारुने. ओके, जो 2011 टाइम रे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चले थिला अंडर द लीडरशिप ऑफ केजरीवाल, अन्ना हजारे माने सब थिले. सो अन्ना हजारे वाज कंसिस्टेंटली डिमांडिंग दिस, वी मस्ट इंक्लूड द राइट टू रिकॉल. ये राइट टू रिकॉल कौन देखिबा? राइट टू रिकॉल इज अ mechanism that allows voters to remove elected representatives from office before the end of their term. तो आपण बिफोर द एंड ऑफ द कारण बर्तमान आपण वंस भोट देदेले 5 वर्ष पर्यंत से बसिक रहा. सो अंडर दिस राइट टू रिकॉल यू कैन रिकॉल दैट पर्सन विद द ग्राउंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, ओके, और अनफिट टू परफॉर्म और करप्शन बेस रे आपण ताको रिकॉल करि परिबे. राइट टू रिकॉल इंडिया रे अछि कि? ओबियसली नो. राइट टू रिकॉल इंडिया रे नाही. There is no such constitutional status, not a fundamental right, not yet included in the parliament or any such legislative process. Where it exists in India, some Indian states have introduced right to recall for the local bodies. पंचायत लेवल रे किछि जगह रे अछि, जेमति मध्य प्रदेश पंचायत राज एक्ट सेक्शन 47, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत लोकल बॉडीज एक्ट, बिहार पंचायत एंड अर्बन बॉडीज, बिहार पंचायत राज एक्ट 2006, Rajasthan Panchayat Raj Act, and Uttarakhand local bodies, that is the state law. So these are the some of the instances where in states this right to recall are being practiced, but there is no mention in the constitution or parliament or state legislature. We are not practicing that. Argument in favor of the RTR is देखिए, it increases accountability of elected representatives. That means you are always in the performance mode कि केबे भी अपन को right to recall ही जाई पारे.
स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जमी आप कहले आम केवल भोट दौचे बट आम इनक्रिज करूना आम पार्टिसिपेशन को आम इनक्रिज करें डिस्करेजेस करप्शन एंड कॉम्प्लेजेंसी ओके एंड एम्पावर्स सिटीजन बियॉन्ड द इलेक्शन आम से जो इलेक्ट्रल प्रोसेस इलेक्ट्रल रोल जो अच्छे ना द पीपल और सिटीजन ऑफ दिस कंट्री केवल भोट देदेले से बट ये आपंकर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन आप करें एगेन्स्ट कौन देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि मिसयूज भी करा जाई पारे ओके पार्टिसनशिप अदर ऑपोजिशन पार्टीज तरफ भी मिसयूज करा जाई पारे कॉस्टलियर एंड टाइम कंज्यूमिंग बारंबार इलेक्शन मध्य करने को पड़ पारे एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जोटा अच्छी दैट विल बी अंडरमाइंड ओके मैरिटाइम लॉ देखिबा in August 2025 Parliament passed the Merchant Shipping Bill 2025 replacing the Merchant Shipping Act 1958. The new law modernizes and consolidates India's maritime legal framework in line with the international conventions. Okay, देखिए कौन अच्छे फीचर्स गुड़ी को रिपील ऑफ 1958 एक्ट द ओल्ड लॉ वाज आउटडेटेड एंड इनकंसिस्टेंट विद द करंट शिपिंग नीड्स ओके 1958 रे लास्ट लॉ आपनकर थिला सो वर्तमान ताकू रिवाइज करा जाउची सो आफ्टर सो मेनी ऑफ चेंजेस ग्लोबल कंप्लायंस अलाइंस इंडिया शिपिंग रेगुलेशन विथ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप सिंप्लीफाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जोटा आम इज ऑफ डूइंग बिजनेस कौचे एंड ट्रेड फैसिलिटेशन बोली आम कौचे इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स अलाउज बेयर वोट चार्टर रजिस्ट्रेशंस marine casualties देखिए introduce a clear process of investigating shipping accidents ensure accountability so these are the few features which have been included in the newly introduced this maritime law आउ कौन देखो पोल्यूशन कंट्रोल जो मराइन पोल्यूशन होची ताको केमती कंट्रोल करा जाई परिबो जेमती ऑयल स्पिल होची कौन जेमती शिप गोटे आसुची ना जो कंटेनर आसूची जदि से ऑयल आपन रोची जो क्रूड ऑयल आम इंपोर्ट करा जाउची बेले बेले ऑयल स्पिल भी हुए लीकेज हुए तो दैट इज ऑल्सो थ्रेट टू द मैरीटाइम लाइफ मराइन लाइफ जोटा आम कहे ओके वेलफेयर ऑफ द सी फेयरर्स यानी कि सेफ्टी सिक्योरिटी आपने देखिए पायरेट अटैक भी हुए काफ़ी कमर्शियल सीप उपर ताको भी केमती प्रोटेक्ट करा जिवो डिजिटलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन को इजी करा जिवो ट्रेड फैसिलिटेशन करा जिवो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करा जिवो प्लस नॉन कन्वेंशन वेसल्स प्रोवाइड्स रेगुलेशन फॉर द इनलैंड वेसल्स फिशिंग बोट स्मॉलर शिप्स नॉट कवर्ड बाय द आईएमओ नॉर्म्स तो आगु आईएमओ नॉर्म्स रे ये स्मॉलर शिप फिशिंग बोट कवर नथिला तो बर्तमान सेटा को मते इंक्लूड करा जाउची व्हाट वाज द रिफॉर्म नीडेड आउटडेटेड लीगल प्रोविजन फ्रॉम द कॉलोनियल एरा फ्रेमवर्क 1958 तो 1958 रे जो लॉट थिला दैट वाज बेस्ड ऑन द कॉलोनियल फ्रेमवर्क सो वी नीडेड ए न्यू वन ग्लोबल शिपिंग एंड ट्रेड इंक्रीज होची इंटेंसिटी ट्रेड रो बढ़ुची तो वी नीड ए न्यू लॉ मैरीटाइम सिक्योरिटी मैरीटाइम एक्सीडेंट को मिनिमाइज करबा इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करबा रेगुलेट करबा एंड सिक्योरिटी थ्रेट ग्लोबल शिपिंग हब भाव इंडिया को प्रमोट करबा प्लस ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव को आहरी मजबूत करवा स्ट्रॉन्ग करवा ब्लू इकोनॉमी इन द सेंस कि रिसोर्सेस इन द सी ओके फिशिंग हो माइनिंग हो ये सब जिनस गुड़िक ब्लू इकोनॉमी आम कहे चैलेंजेस कौन ओबियसली लोकल पोर्ट लेवल रे इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी आमको देखा पड़ो एट द लोकल पोर्ट लेवल नीड फॉर ट्रेनिंग मैरीटाइम ऑफिशियल्स जो न्यू लॉ अनुसार ट्रेनिंग भी दि जावा दरकार स्टेट लेवल मैरीटाइम बोर्ड ऑल्सो वी नीड टू अलाइन विद दैट एंड जो सी फेयर राइट्स अच्छी ताको भी आपन को एनश्योर करवा को पड़ो ओके एमपीसी देखिबा आपनकर मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जोटा अच्छी होल्ड्स रेपो रेट एट 5.5% मेंटेन्स जीडीपी ग्रोथ एट 6.5% एमपीसी होल्ड्स रेपो रेट एट 5.5% जीडीपी ग्रोथ रिटेन्ड एट द 6.5 तो रेपो रेट केते रखिले 5.5 सेमती रहिला किछि चेंजेस नाही रिवर्स रेपो रेट रिमेन्स अनचेंज्ड GDP growth projection maintained at the 6.5%. Inflation forecast slight upward revision due to food prices slightly body pare. Policy stance withdrawal of accommodation to ensure inflation control while supporting the growth. तो with withdrawal of accommodation in the sense कि inflation को
जो कंट्रोल करबा पई जो अकाउंटेड यानी कि जो पॉलिसी सपोर्ट करा जाउतला धीरे धीरे ताको ग्रेजुअली आरबीआई विड्रॉ करिवो काहेकि ना इन्फ्लेशन रेट काफ़ी मॉडरेट अमाउंट रे अछि विद इन द कंट्रोलिंग लिमिट रे अछि। रेपो रेट कोन ना इट्स ए शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट जोटा कि आरबीआई चार्ज करे कहा पई कमर्शियल बैंक्स पई। ओके, ए की टूल इन मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी। कारण रेपो रेट जदि बढ़िबो मनी सप्लाई आपनकर कमिबो, रेपो रेट कमिबो मनी सप्लाई बढ़िबो। सो थ्रू दैट वी कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट एज वेल। ओडिशा स्पेसिफिक न्यूज़ देखिबा, dropout rates in Odisha goes down to 18% from 33%। यदि आप देखिए सेकेंडरी ड्रॉप आउट रेट क्लास 9 and 10 among the ST student Odisha has fallen from 33.1 to 18.1 approximately। This is now better than the national average, that is 19.6% dropout among the ST population। प्राइमरी लेवल यदि आप देखिए 0.7 dropout rate, upper primary 4.6 dropout rate, and this trend shows improvement in the retention। That means students are not going or not leaving the education system, खास करके सेकेंडरी एजुकेशन। चैलेंज कौन अच्छी ना ड्रॉप आउट अमंग द एसटी बॉयज रिमेन हाई कहीं ना कौन जॉब पाई काम पाई से पढ़ाऊँ। क्लास 8 ऑनवर्ड्स में माइग्रेट फॉर वर्क लीडिंग टू ड्रॉप आउट्स। काउंसलिंग अवेयरनेस अमंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ये भी गोटे फैक्टर। 18% इज स्टिल हाई डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखो हॉक। Odisha is set to adopt Hawk Hostile Activity Watch kernel, a high-tech platform currently used in Kerala to curb wildlife crimes and improve forest management। Full form देखो Hostile Activity Watch kernel developed by the Kerala Forest Department। Type cloud-based and real-time information management system। function कौन ना wildlife crime को track करिवो। Its data analysis and intelligence generation replaces manual crime documentation and enables coordinated enforcement। अगर जो मैनुअल कम होता बर्तमान डिजिटलाइज यानी कि क्लाउड सिस्टम रे कम हम, कोऑर्डिनेशन विल बी इम्प्रूव्ड एंड इंटेलिजेंस गैदर करा जिवो, डेटा गैदर करा जिवो। इम्प्लीमेंटेशन देखिबा विल बी रोल्ड आउट स्टेट वाइड टू रिप्लेस मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन। फील्ड स्टाफ विल बी इक्विप्ड विद द रियल टाइम टूल्स सो दैट दे कैन ट्रैक द क्राइम, खास करके पोचिंग हंटिंग जो होची प्लस एनिमल वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भी बेले बेले देखा मिलूँ। एंड दिस इज द डेटा ड्रिवन एनफोर्समेंट जहाँफल रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर एंड डिले हो पार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रैकिंग द क्राइम। एमसीक्यूज को देखा, व्हाट डज हॉक स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। कौन हम आंसर कौन हम हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल जस्ट अभी डिस्कस करूँ आम। यस सर नो हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल दैट इज बी हव आंसर। ओके, नेक्स्ट which Indian state first implemented the hawk system to combat wild crimes? It is the Kerala, right? Monetary Policy Committee decides, कौन decide करे? Benchmark interest rate, that is the repo rate, right? What is the current inflation target set for the MPC Monetary Policy Committee? जोटा range of inflation जोटा हमर अछि, range of inflation एटा होची आपनकर 4%। एटा हो 4% प्लस माइनस 2। %4 प्लस माइनस 2 हवा एटा। ओके, ऑप्शन नहीं ठीक 4 प्लस माइनस 2 हवा कथा कारण रेंज हूँ 2 to 6 मन थी आपंकर। ये हूँ मेन्स क्वेश्चन आपंकर। इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज AI, ड्रोन्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम कैन ट्रांसफॉर्म वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, डिस्कस विद एग्जांपल्स। डिस्पाइट एफर्ट्स ड्रॉप आउट रेट्स। ओके, ट्राइबल स्टूडेंट्स रिमेनिंग कंसर्न एट सेकेंडरी लेवल, डिस्कस द रीजन्स एंड सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव द रिटेंशन इन द ट्राइबल एजुकेशन। ओके, बाकी आमर जो 7 तारिख आज आपंकर फाउंडेशन बैच स्टार्ट होची। जो मैंने भी चाहूँ जॉइन करने जॉइन करें
कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज प्रिलिम्स मेन्स एंड इंटरव्यू यूज करेंगे कोड जे इन लाइफ टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ओके पीडीएफ आपन को मिल जाव टेलीग्राम रे कालीठू आज इट इज या आज यूजुअल 9 AM रे ही क्लास रहिबो ओनली फॉर द टुडे द टाइम वाज चेंज्ड 8 AM रु कालीठू सेमती 9टा बेले ही क्लास रहिबो थैंक यू वेरी मच सी